हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल CS भाषा। आज हम एक टॉपिक और लेंगे, arrays in Python. Some of you might be aware of the other programming languages also, like C++ and all that, where you use the array. Array is much similar to the lists that we have in Python. So अभी तक हमने क्या किया है कि बाइनरी सर्च मेथड हमने यूज़ करा है रिकर्शन के अंदर यूजिंग द लिस्ट। ओके, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है हम लोगों को कि अगर हम सर्चिंग कर रहे हैं फॉर नंबर, बट आपने लिस्ट के अंदर, बिकॉज यू नो लिस्ट के अंदर आप डेटा हर तरह का डाल सकते हैं। यू कैन हैव अ डेटा ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑल्सो, यू कैन हैव इट फ्लोट ऑल्सो, यू कैन हैव अ स्ट्रिंग ऑल्सो। सो अगर किसी ने गलती से लिस्ट ऐसी बना दी तो ऑब्वियसली उसके अंदर सर्चिंग तो पॉसिबल होगी नहीं, बिकॉज सॉर्टिंग ही पॉसिबल नहीं होगी। तो ऐसे केस में हम एरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एरेज क्या करता है, आपको डेटा अलाउ करता है सिर्फ ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप, ताकि अगर आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो सिर्फ इंटीजर ही अलाउ होगी, अगर आप कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं तो कैरेक्टर ही अलाउ होगा, या अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही अलाउ होगा। तो पहले देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज एन एरे। ओके, सो एरे क्या है? लिस्ट की तरह से ही है, इट इज सिमिलर टू द लिस्ट, बट हाउ इज इट एग्जैक्टली डिफरेंट, वील जस्ट सी। List can contain data of all types, all right, so there is no restriction, that means it contains a heterogeneous data. लेकिन हमारा एरे जो है इट कंटेन्स होमोजीनियस डेटा। होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही तरह का डेटा। अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो सिर्फ इंटीजर होगा, अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी। विच मीन्स अगर हम एक लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट के अंदर वी आर अलाउिंग इट टू हैव डेटा ऑफ डिफरेंट विच कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज, ऑल राइट। सो ऐसे केस में सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं होगी, ऐसे केस में सर्चिंग वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज बाइनरी सर्च एग्जैक्टली नहीं चलेगा। चलने को तो यू कैन ऑलवेज हैव अ लीनियर सर्च प्रोग्राम, बट देन you will not be able to have a binary search concept, because if you remember, in binary search you need to have the list sorted. Okay, but in arrays, so this one is definitely allowed in list, but then the restriction is that you will not be able to sort this. But on the contrary, if we talk about arrays, if we try to store this kind of value in an array, it will not be allowed. So what kind of values are allowed? Where a list can, if it's storing only integer values, it will only allow integer values. If it's storing floating point values, means the values with the decimal point, it will only allow these kind of values. All right, तो अब देखते हैं कि एरेज को क्रिएट कैसे करा जाता है। तो एरेज को क्रिएट करने के लिए हमारे को इंपोर्ट करना पड़ता है एरे मॉड्यूल। तो अगर हमारे पास एरे मॉड्यूल है तो एरे हम कैसे क्रिएट करेंगे? एक वेरिएबल लेंगे, वी विल से array. Now array module itself has a function called array. Okay, so through this you basically, it has two parameters. The first parameter is what type of data it should allow, only integer. So there is a whole list and chart for this, which I'll show you in the slide. So if I just want to store, I want it to store only integer value, so that each value can occupy say 2 bytes of memory, then I have to write small I in single quotes, as I said, बाकी चार्ट में आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी, and put a comma, use a square bracket and assign the value. मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगी कैसे करने के। So if I am saying say 12, 4, 6, close the square bracket, this, press enter. So now the array has been created with the name A. बट अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हमारा ये ऐसे ही होगा, प्रिंट ए करेंगे, सो यू विल बी एबल टू सी द एरे लाइक दिस। नाउ इफ सपोज आई एम ट्राइंग टू append it with a floating point value, now it will going to use some of the functions just the way a list can use. It uses pop also, it uses remove also, it uses a function like append also, it uses insert also. But अगर हम इसके अंदर, अब सपोज इफ आई वांट टू से a dot append and I would like to insert in it say the value 12.3. all right, so can you see, it will going to show me the error saying that the integer argument expected not float, so the decimal will not be allowed once you have that. How am I supposed to access each value? Just use a simple for loop for I in
range 0 comma, and then you simply say the len of a. Just simply say print a of I. All right. So when you do that and press, can you see the three values are printed just the way? So you basically use it exactly in the similar manner. Now let's just quickly see what are the different ways. Now suppose I try to initialize an array. Now if suppose I don't initialize an array, I want to accept the value into an array one by one. So I can even do that. So I can say b is equal to array start a bracket and just simply provide the code for what type of value it should be allowed, and don't provide the value. Now when you do that, you now have an array which is absolutely empty. Either you can use an append, or you can even say that if I want to have say one value and I want to accept the value from the user, you can even say so b dot let's first accept the value. So x is equal to int input enter a number. So once you take a number, suppose I'm taking a number 12, now 12 is stored in x, I simply say b dot append and simply the value was stored in x. Alright, so when you press enter, just print the value of b and see. One value is already inserted. So this way you can have, but not all the functions which are applicable in list will be available in arrays. So arrays की कुछ restrictions और limitation भी हैं, but उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि जो अभी हमने फटाफट से स्टडी करा है. सो किस तरह का चार्ट है हमारे पास फॉर स्टोरिंग डिफरेंट वैल्यूज. देखो आपको इन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली हम सर्चिंग के अंदर जनरली इंटीजर डेटा या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा की बात ऑब्वियसली करते हैं. ओके, सो अगर आपको इंटीजर डेटा के बारे में स्टोर करना है, इफ़ यू वांट टू हैव एन array of the type I, that means integer it should allow, then you should use small I. Now the only difference between small I and capital I is that small I allows you to insert negative as well as positive value, which means sign is allowed. But the moment you convert it into capital I as a code, the moment you try to insert a negative value आपको allow नहीं करेगा, जबकि size दोनों का almost एक जैसा ही है, equal number of bytes. इसी तरह से आपकी जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ अगर आप डालना चाहते हैं, मतलब वैल्यू विद द डेसिमल पॉइंट, तो सेम कॉन्सेप्ट है. स्मॉल f लिखेंगे तो आपको इट विल गोइंग टू अलाउ यू टू हैव अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एंड इट विल अलाउ यू टू हैव नेगेटिव एज वेल एज positive value also. Okay, so you can just try some of them your own self. You don't have to know each one of them. बस आप integer values और floating point values के लिए you can always do the experiment. Okay, so let's see how arrays are created. As I just told you and I had shown you also, import the array module, use the array function to insert the array element. So how did I declare it? I just said the name of the variable that you want to have it as an array is equal to array.array, and of course you're supposed to write the code. That means what kind of value it should have, an integer or a floating point value, and insert the values in square brackets. Now let's see what are the other functions that can be allowed in the array which is existing. So you can always append the value. If I want, if this was my array 2 5 6 8 elements and I would like to insert in value, I am allowed to use that. So if I do, I can always have a value at the end. Similarly, I can also use a pop function where if I would like to remove the value at a given subscript, that will be removed. So 2 5 6 8 3 was the original array. If I say pop 2, this 6 will be removed from the array. Similarly, if I want to say remove, again it will remove the first occurrence of the given number. So if there are 2 that's occurring twice in the array, wherever is the first occurrence, that will be removed and the new array will be 5 8 2 and 3. Insert, as you know, at a particular position, I can always have a value. So if you want to insert an element at a particular position, you have to provide just the way you have been using in the list. Okay, and the another thing that is also allowed in an array is whatever are the elements that you have in the array, if you want to store the reverse in the same array, you just have to say a dot reverse and all the elements will be reversed. Of course, sorting
Sort function or sorted will not going to work with the array. So you have to apply the logic that you people have studied in class 11, which is your insertion sort method and your bubble sort method. So you will just use the way I have already told you about the for loop, and there will be no difference at all. All right. So binary search is the same concept that we do with, if you remember the logic, this was the logic that we had used with the list. Now the only difference that we are supposed to use with the array will be, just see the difference, and I've marked it in blue. You are just supposed to import the array module, and you're supposed to create the array, store the elements, and rest there is no difference at all. See how simple it was. So binary search method, when you are implementing it either using arrays or using list, is absolutely same. The only difference is just the declaration of an array. तो आप array को कैसे declare करते हो ये मैंने आपको बता दिया है. आपको array को sort करने के लिए definitely function use करना पड़ेगा. Function मतलब not a built-in. Of course you can create your own module as has already been told in the previous section. So create your own module, write the sort function, call the sort function, and sort your array. That will absolutely be easy for you. Okay, so that can be done, and you can simply apply binary search methodology with the arrays. जस्ट एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, फिर से रिकॉल करा दूं कि हमारे पास किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के 3 तरीके होते हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया था इंपोर्ट एरे, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको इस मॉड्यूल को यूज़ करना पड़ेगा. अगर मुझे एरे फंक्शन यूज़ करना है, सो आई हैव टू राइट एरे डॉट एरे and whatever array function that I'm talking about. all right. लेकिन अगर मैंने लिखा होता from array import star, so the moment you use from, I mean there's no restriction that you have to prefix the function with the name of the module. so आप सीधा सीधा लिख सकते हो a is equal to array सिंगल कोट्स आई एंड इट विल वर्क. सी कोई एरर नहीं आया ना. इसी तरह से अगर आप लिखते हो import array as as, so the moment you write this and you're comfortable with this method of using a module, then the only difference will be you will say a is equal to, अब array लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या लिखोगे, as dot array with I. Okay, so these are the three basic ways which I have of course already told you in the previous lecture also, and I think now you understood. There is no difference at all in the binary search method, as I have been telling you, the implementation either using arrays or using list. It's absolutely same, just the declaration is different. So if you like my video, please press the like button, share and subscribe. Thank you so much. And of course, if you have any query, do write it under the comment section. I will definitely try to resolve it as soon as possible. Take care.